Action. Hey, what's up folks, my name is Jnanish Nagarkar. So basically I ride an Hornet 160R. So first of all, I would like to welcome you guys on our YouTube channel, so which is known as Pune Motorcycle Club Official. As you know guys, riding is an dangerous passion, but at the same time we have to think like our safety comes first. So whenever you go on rides, make sure you wear quality gears. So today's video is all about one of my safety gears, which is this. So guys, this is my new riding pant. I recently bought this, which is from Scala Gears. Like branding देख के आपको तो पता ही चल जाएगा. So let's quickly unbox this and I'll just quickly explain you the features of it. Guys, these are my new Scala Riding Pants. So this is an all-terrain pant. Like basically सब कुछ आता है इसमें. मैं आपको एक एक करके सब कुछ explain करता हूँ. So first overview लेते हैं कि this is how it looks. You get reflectors over here for night riding, pockets and all. Or brief you about the features of this pant. So first let's start from the top. So over here you get a velcro to adjust accordingly to your size, and the same on the another side. The buttons, a very basic feature. As I said, this is a all-season pant, so you get a warm liners intact from which is completely removable. All you need to do is कि ये पूरा zip खींच लो. ये आपको चाहिए तो आपके season के हिसाब से you can remove it. And over here we have a external waterproof liner. The best part is कि ये external है, so आपका ये जो material है ये भीगेगा नहीं बारिश में. अगर if like most of the people must be knowing कि riding gears अगर भीग गए तो वो सूखने में बहुत दिक्कत होती है, उसको अच्छा टाइम लगता है. तो ये एक्सटर्नल ही रहने चाहिए, तो विच इज अ गुड फीचर. Let's come to on this particular part. So over here we have a 3M reflectors. As you know कि नाइट राइडिंग में सबसे बेसिक एंड कॉमन चीज यही है, रिफ्लेक्टर्स, जो आप रोड पे जा रहे तो हाईलाइट होने चाहिए. सो यू गेट अ डिसेंट क्वालिटी रिफ्लेक्टर्स, लाइक काम अच्छे से करते हैं. This completely pant comes with an SAS-TEC Level 2 armors. Like over here we get on knees, on hips, and a very basic feature of riding pant, and like most of the brands will be providing you this thing like where you can attach to your jacket, so it kind of becomes a complete suit of riding. And then we have the most outstanding feature of this pant, this particular product, is we have like external sliders on this, which is completely removable. But like if you want you can remove it, but I'll just recommend you to keep it intact for more safety and all stuff. Over here we get a mesh liners for like usually mesh materials are breathable materials, so it is another good feature. Again on the back side we have straps to fasten it up according to your size. Again over here we have reflectors. And the best part of riding pants is it provides you safety. At the same time you can tuck in your shoes over here, so this is very adjustable. Like you can adjust according to your boots, so your boots can go into this. So this is a very good pant. Like the material is about like I guess Cordura 600D. So all the details will be in the description, so make sure you guys details you can check out the description. I will be putting up in the description rest of the features. So let's come on to the warm liners. Like it's a very thick material. Like of course in summers it is gonna be hot inside, but it will do the job on minus temperatures as well. As you can see, you can remove it as I said if you want, and especially in summer rides. And let's come to another point. This is pockets. I don't know ये कितने ही use हो गया, like hardly my hand can fit in,
but ठीक है. But again, a good thing from a brand is the quality of this chain. Like the brand name is YKK. Like most of them you guys must be knowing कि YKK के chains बहुत अच्छे quality के होते हैं. So let's come on to this point. Like these are the warranty cards and all this stuff. And ये SAS-TEC का branding के like ये brand के protectors है. तो ये CE level से एक और ऊपर के level के है, तो ये और अच्छे. So let's come on to the point of pricing. So this costed me for like 8.5, like I don't even remember the exact point, like price. आपको description में मिल जाएगा. I guess it was for 8,700 something. So you can purchase it online or something. Another important चीज, whenever you buy riding gear, so make sure जो आपका regular fit है उससे एक size बड़ा मंगाना, because you should feel comfortable in it, ना कि completely you should be like kind of intact in it. तो वो जब आप टूरिंग करते हो तब आपको वो ऐसा किधर पेन या इचीनेस वगैरह वो सब होना नहीं चाहिए. सो देखो लाइक यूजुअली मेरे को तो डबल एक्सएल फिट हो ही जाता है, तो मैंने इस बार एक साइज बड़ा मंगाया जस्ट टू अकॉर्डिंग टू माई राइडिंग कंफर्ट. आई नो माई बॉडी, हाउ इज माई बॉडी. सो वो बात आपके हिसाब से देख लेना साइज के हिसाब से. एंड आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस वीडियो ऑन like while passing on a message for my fellow riders is why riding gears are important. like ये तो बहुत लोगों ने देखा ही रहेगा कि सब लोग बोलते जाते हैं कि क्यों लेने चाहिए वगैरह वगैरह, बट जाते जाते मैं एक ही टिप देना चाहता हूँ कि राइडिंग पैंट्स और राइडिंग जैकेट ये सब कुछ कंप्लीटली गियर्स मेक श्योर खरीदना. आई नो दिस लाइक इन इंडिया ये बहुत एक्सपेंसिव वगैरह होने लग गए हैं, बट स्टिल अपने जान से ज्यादा प्यारी कौन सी चीज नहीं है. सो देखो हम लोग भी स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग ने ये सोच समझ के हल्लो हल्लो करके इन्वेस्टमेंट लिए. दीज आर द इन्वेस्टमेंट्स, नॉट लाइक काइंड ऑफ एक्सपेंसेस. सो मेक श्योर अब राइडिंग के पहले ये होना जरूरी है आपके पास. बट ऐसा नहीं कि स्काला का ही हो, किसी और ब्रांड का भी हो चलेगा, बट आपकी सेफ्टी के हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करिए. दैट्स इट. थैंक यू. Like compared to price, this material and the fit and finish is like up to the mark. अभी तक तो मैंने इतना यूज नहीं किया, as pandemic is going on, so मैंने अब तक रखा नहीं. but like इसका एक long term review भी बनेगा. This was just an like my views on this particular pant. So I'll just quickly wear it and show it to you in 3, 2. So guys, आप देख सकते हो like the fit and finish, it's very up to the mark. So far I'm kind of liking it. अच्छे से बैठा है. लाइक मैंने पहले ही बोला था वीडियो में कि एक साइज बड़ा लेने चाहिए. तो द रीजन इज दिस, लाइक आई डू लाइक सैडलिंग एंड ऑल स्टफ एंड डू लॉट ऑफ लॉन्ग टूर्स. सो इन दैट जो मटेरियल थोड़ा ऐसा मेरे को ज्यादा ऐसा स्किन फिट वाला नहीं चाहिए था, तो उसने एक साइज बड़ा मंगाया है. दैट्स इट. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू लेट मी नो how's this video and all, and make sure you like, share, subscribe and help us to grow. and जरूर वो घंटी जरा बजा देना. एंड कमेंट में जितने भी अपने बंदे देख रहे हो तो हैशटैग कमेंट करना PMC एक संगठन. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय PMC. दिस इज D7 signing off. Bye bye.